एक एलियन के प्राइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। He spent 10. Hello. So, today we are here with a new series. What new series? Well, today we're gonna do GFG problem of the day, and let's see कि हम POTD रेगुलर कर पाते हैं कि नहीं. I'm hoping to maintain a better consistency than lead code daily problem, but let's see. So let's see what's today's POTD. POTD for the day is mirror tree. Okay, mirror tree. Well, let me get into it. All we have is a binary tree. We are acquainted with a binary tree, right? Any tree in which each node can have only maximum to 2 child nodes is a binary tree. Simple enough. Okay. Hence the term binary. Binary means 2, right? Yeah, it does. Then we have to convert the binary tree to its mirror. Well, how will we do it? What we're gonna do is, we have a binary tree here, something like this, and then we'll keep a mirror somewhere here, and we are trying to figure out the mirror image of this binary tree. Well, how will we figure that out? For that we'll have to get into what a mirror does. Okay, a mirror, what does a mirror does? Well, it helps you look better, but apart from that, when you think from the point of view of physics, it does something called lateral inversion. What is that? Lateral inversion. That is a very fancy term, right? Lateral inversion. Lateral inversion means nothing more serious than converting right to left and left to right. How? Right to left and left to right. Now let's try to understand with the help of examples here. We have a tree here that looks something like this. Well, you can read this input, but it won't give you much idea of a tree unless you draw it. So better look at the picture directly. We have a tree in which we have the left side represented by red and right side represented by green. Correct? Here we have the tree, and on the left side we have what? 2. As you can see, it's marked by red. And on the right side of the root node we have 3. Okay, so in the mirror of the tree, the left side will be represented by 3 and the right side will be represented by 2. Now we don't have to do it only at the root node, we have to do it at each and every node. But for flipping at each and every node, we must remember ना कि node के children भी तो होना चाहिए. Flip क्या कर रहे हैं? Children ही तो flip कर रहे हैं. Correct. तो अगर children ही नहीं होंगे तो flip क्या करोगे आप? तो यहाँ पे हमको बस ये ध्यान रखना है कि किसी भी नोड का चिल्ड्रन को हमको फ्लिप कर देना है. अगर किसी नोड का लेफ्ट चाइल्ड है उसको राइट चाइल्ड बना दो, राइट चाइल्ड है उसको लेफ्ट चाइल्ड बना दो. कैसे? ऐसे. समझे? करेक्ट. तो अब हम ये करेंगे कैसे? चाइल्ड्स को फ्लिप कैसे किया जाता है? For understanding that, we'll have to make sure that we know कि childs connected कैसे होते हैं किसी भी रूप से. पॉइंटर्स के थ्रू. C++ के इम्प्लीमेंटेशन का बात कर रहा हूं. कोई भी नोड अपने चाइल्ड को पॉइंटर्स के थ्रू पॉइंट करता है. करेक्ट. तो अब हमको अगर लेफ्ट वाले चाइल्ड को राइट में शिफ्ट करना है और राइट वाले चाइल्ड को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, विच मीन्स हम लेफ्ट वाले चाइल्ड का जो पॉइंटर है उसको राइट में पॉइंट कराने लगेंगे और राइट वाले चाइल्ड का जो पॉइंटर है उसको लेफ्ट में पॉइंट कराने लगेंगे, which is basically a swapping of pointers, just like you saw in that meme, right? तो एक और एग्जांपल है यहाँ पे सेम चीज का. 1 है, इसके लेफ्ट में क्या है? 2 है, और राइट में क्या है? 3 है. लेफ्ट रिप्रेजेंटेड बाय रेड, राइट रिप्रेजेंटेड बाय green. So left here, right is here. यहाँ पे लेफ्ट में क्या है? 2 है. यहाँ पे राइट में क्या है? 3 है. मिरर में क्या हो गया? लेफ्ट में आ गया 3, राइट में आ गया 2.
सिमिलरली अब ले 2 के चिल्ड्रन देखते हैं। 2 के राइट में क्या है, 5 है, कहां पे, ओरिजिनल में, जबकि 2 के राइट में यहाँ पे क्या आ गया, 4 मिरर में, जो कि ओरिजिनल में कहां पे था, 2 के लेफ्ट में था। ठीक है, यहाँ पे 2 के लेफ्ट में था, जो यहाँ पे 2 के राइट में आ चुका है, और यहाँ पे जो 2 के राइट में था वो यहाँ पे 2 के लेफ्ट में आ चुका है। तो अभी तक हमको क्या क्या समझ में आ गया है, हमको ये समझ में आ गया है कि हमको सारे नोड्स पे करना है। ठीक है, तो जब भी हम ट्री में कोई काम सारे नोड्स पे करना होता है तो उसके लिए हमको ट्री ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ट्री ट्रेवर्स कैसे कर सकते हैं, ट्री ट्रेवर्स करने के 2 तरीके हैं, इधर इटरेटिवली और रिकर्सिवली। लेकिन हमको क्योंकि पता है कि हमको हर एक नोड पे जाके सेम काम करना है, तो यहाँ पे रिकर्सिव कॉल्स वुड बी अ बेटर ऑप्शन। करेक्ट, करेक्ट। तो रिकर्सिव कॉल्स करेंगे, बट जब भी हम रिकर्सिव कॉल्स करते हैं तो रिकर्सिव कॉल्स का एक स्ट्रक्चर होता है। सपोज मैंने एक मिरर फंक्शन लिख दिया जिसके अंदर मैं अपना रूट नोड दे रहा हूं। ठीक है, क्या दे रहा हूं, रूट नोड। तो अब मैं क्या बोलूंगा इसके अंदर, अब यहां पे मुझे एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना है, तो सबसे पहले आ जाएगा बेस केस, फिर आ जाएंगे मेरे रिकर्सिव कॉल्स, और आखिरी में बस मैं रिटर्न स्टेटमेंट डाल के फ्री हो जाऊंगा। ओके, इट्स फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट से मेरा जो मिरर फंक्शन है वो वॉइड टाइप का है। कुछ नहीं भाई, तो बस स्ट्रक्चर्स चेंज कर दे हमको, और कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे। तो बेस केस क्या होगा, नाउ लेट्स सी व्हाट इज बेस केस एक्चुअली। बेस केस इन मोस्ट केसेस इज द लीस्ट फीसिबल आउटपुट, सॉरी, या फिर कहना चाहिए सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, नॉट आउटपुट, इट्स स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट। So what is the smallest valid input in this case? यहाँ पे सबसे कम इनपुट क्या दे सकते हो तुम? well, इनपुट ही एक नोड है, तो अगर मैं एक नोड ना दूं तो वो भी तो वैलिड होगा कि मैंने तुमको कोई पॉइंटर दिया, उस पॉइंटर पे कोई नोड ही नहीं है, जैसे यहाँ पे था। अगर इस 2 के लेफ्ट में जाने का ट्राई करता मैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, विच इज अ नल पॉइंटर। सो द नल पॉइंटर इज द स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट हियर। Okay, so the base case will be promptly handling this null pointer here. So what can I write? I can simply write that if you find a null pointer, simply return. Okay. So how can I write that? If root is null, I can either write root is null, or I can write does not exist root. It also means that the root is null. What you have to do? You have to simply return. Then the recursive calls. So what that we are doing in recursive calls, we are switching the pointers. Okay, but before switching the pointers, I have to make sure that the pointers of the node which I'm given are switched. So between base case and recursive calls, there's also something called logic. What comes here? Here comes the logic of the question. So what is the logic here? Switching. How do I switch two values? By using a temporary variable, correct? Well, at least when I'm switching pointers, that is one of the most common ways. So what I will do, I'll take a temporary variable, something like this. I will make a temporary pointer that is pointing to my left. Then I will ask my left pointer to start pointing to the right. Now at this point, my left pointer is also pointing to my right, and my right pointer is also pointing to my right. Okay. Now, since nobody is pointing to my left, that's why the temp is pointing towards it. And for that purpose only, I will make the right pointer point to temp now. Can you see that the switching is done successfully now? Yes, that's what I'm gonna do everywhere. First of all, I'll make a temp pointer which will point to the left, then I'll make the left point to the right, and then I will make the right point to the temp. Steps क्या थे? Temp to left, left to right, right to temp. Simple. This is what I'm gonna implement in the code. As you can see, make a temp pointer that is pointing to the left, make the left point to the right, and make the right point to the temp. Then let's come to recursive calls. Once I'm done here, I want the same thing to be done at the root, like my left child 2 and my right child 3. So
Yeah, that's what I'm gonna do. I'm gonna call the function for the left child and the right child. And that's it. The question is over. Once I'm done with these steps, I'll simply state return as done in the structure. Okay, okay. So that's all for this video. I hope you liked the explanation. I hoping it was better than the last time. And that's all. See you guys later. Bye bye. बात है इसकी खास बड़ी, भाग्य की रेखा है लंबी, इसका गुडलक तगड़ा है और किस्मत का है बड़ा ये धनी। इसका नसीब है सबसे बेमिसाल, ये है तकदीर का राजा।